was a physicist. Sir J.J. Thomson was a physicist, and he got a Nobel Prize, for discovery of electron. तो इसने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे बड़ी चीज है अभी की दुनिया में, इलेक्ट्रॉन्स, राइट? व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सर जे.जे. थॉमसन way back. And what was the year? The year is also important. The year is 1910. Sorry, 1890. 1890. Yes, next point write down. Sir J.J. Thomson perform experiment called as cathode ray tube. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ वो किससे हुआ? द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज द कैथोड रे ट्यूब. बराबर है? सो आई विल मेक यू एक्सप्लेन व्हाट इज कैथोड रे ट्यूब, बट व्हेन आई विल कम टू द जे.जे. थॉमसन मॉडेल, ज्यावेळेला मी तुम्हाला डिटेल मध्ये शिकवेन जे.जे. थॉमसन मॉडेल, त्यावेळेला मी तुम्हाला कॅथोड रे ट्यूब चा सेटअप कसा आहे पूर्णपणे दाखवेन. ओके, बट फॉर नाउ यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कैथोड रे ट्यूब वाज द एक्सपेरिमेंट by which it led to the discovery of a electron. Okay, next point. Sir J.J. Thomson said that atoms consist of subatomic particles. बराबर है ना? सो जैसे कि पहले केस में हमने देखा था, व्हाट डिड डेमोक्रिटस सेड? डेमोक्रिटस सेड दैट एटम में कुछ भी नहीं है, इट इज ओनली सॉलिड इन द नेचर, राइट? बट व्हाट जे.जे. थॉमसन इज सेइंग, जे.जे. थॉमसन इज सेइंग दैट एटम कंसिस्ट ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल. सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर भी और इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसको कभी कभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं, राइट, इन अ साइंटिफिक टर्म. विल सी दैट फर्दर, बट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट. सो कौन है वो फोर्थ वाला महारथी? यस, राइट डाउन द नेम. अर्नेस्ट रुदरफोर्ड. गिव द हेडिंग. Ernest Rutherford. So let's see what he told. See, my dear students, this all theories we are going to learn in a detail. I am just telling you about the history of atom. Okay. Now write down Ernest Rutherford. Rutherford found out some drawbacks. Rutherford found out some drawbacks in Thomson's atomic model. Right? Next point, write down. He
performed the gold foil experiment. Gold foil experiment. So what kind of experiment he performed? He performed the gold foil experiment, and that was a very very interesting experiment. And due to this gold foil experiment, he found out that atom does not only contain the protons, electrons and neutrons, but atom के अंदर nucleus नाम का भी कोई चीज है. Are you understanding? Who found out this? It was founded by the Rutherford. Rutherford said that the space around the atom is empty. देखो उसने क्या बोला कि this is atom. एटम के बीच में जो जगह है that is nucleus, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है that is revolving outside, right? Then he said the space which is there, this particular space is empty space. यानी कि इसमें जो स्पेस है वो सारा का सारा एम्प्टी है, और जो एटम का जो मास है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. यानी कि सारा का सारा एटम का मास कहां पे है? न्यूक्लियस में. एंड द रेस्ट ऑफ द स्पेस इज एब्सोल्युटली एम्प्टी इन द एटम. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन. ही प्रपोज्ड प्रपोज का मतलब वो वाला प्रपोज नहीं है. You people know better than me. Why need to teach you all these things? Okay, anyways, write down. He proposed the planetary model of atom. He proposed the planetary model of atom. Planetary model of atom means what? Planetary model of atom is like this. See, one shell, second shell, one more shell, right? This is called as the planetary model of an atom, right? So this is where we can see that the electron, this is the center, and the electrons are revolving around the nucleus, right? So such kind of a model was introduced by the Rutherford. Okay, next point, write down. He said that atom has a nucleus. Atom has a nucleus, and the mass of an atom is concentrated in nucleus. The mass of an atom is concentrated in a nucleus. Okay, last one. Neil Bohr. Give the heading. Not the last one, second last. Neil Bohr. Okay, write down. Neil Bohr introduced Bohr's atomic model. Neil Bohr introduced Bohr's atomic model. Right? So what was the model given by the Neil Bohr? That was the Bohr's atomic model. Okay, next point, write down. Neil Bohr was a quantum physicist. Right? Okay, then what he introduced? He introduced the concept of energy level. He introduced the concept of
energy level of electrons. Right? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, what happens in the atom? In the atom there is a presence of an electron, and this electrons, they jump from a one energy level to the other energy level, and this particular concept was introduced by the Niels Bohr in the model called as the Bohr's atomic model. Okay, I hope that you have understood what was the introduction. And one more point he told that if the atom is present, electron is revolving around, and this is the nucleus, then why doesn't the electron fall on the nucleus? Are you understanding? उसने क्या थियरी बोला कि जो रुदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया है, प्लैनेटरी मॉडल, he accepted that model, but he said that the electron which is revolving around, why it is not getting fall on the nucleus, or why it is not colliding on the nucleus. Then he came to the conclusion that electrons never fall on the nucleus because they have a certain energy levels, right? और उसी energy level में वो काम करते हैं. That means they either absorb the energy and go to the higher level, or they either emit the energy and they come to a lower level. ओके, तो जब हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जो मैंने क्वेश्चन बोला था, व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट कोलाइड ऑन द न्यूक्लियस, तभी मैं तुमको उसका आंसर दूंगा. ओके ओके, देन कम्स द लास्ट वन, गिव द हेडिंग Schrödinger. Write down, Schrödinger was also a quantum physicist. Schrödinger was also the quantum physicist, and he introduced the cloud model of atom. He introduced the cloud model of atom. Okay, next point, write down. He said that atom consists of electron. He said that atom consists of electron, and we can find out the exact location and position of electron. राइट? उसने बहुत ही सिंपल सा फंडा बोला है. उसने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है, सी द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, राइट? अगर ये रिवॉल्व करता है तो इसमें क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग? देयर इज सम काइंड ऑफ अ वेलोसिटी. कुछ तो स्पीड होगा ना, उस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है. तो इसने बोला कि इवन दो इफ इट इज रिवॉल्विंग, we can find out the exact position as well as we can find out the exact location of the atom, right? And that can be done by the Schrödinger equation. और एक प्रिंसिपल भी उसने दिया उसके लिए. That principle is called as the Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. You can note down this. Next point, write down. He introduced Heisenberg's uncertainty principle. He introduced Heisenberg's. Yes, write down the spelling. Heisenberg. Heisenberg.